Good evening, Sonu, Adya. Ritanshu, Pragya, good evening. Today I forgot to send the link. Join fast, all of you. Okay, so we will start. Up till now we have finished hot deserts, Sahara desert. Hot desert means Sahara desert. Now in the cold desert we will case study, we will take the example of Ladakh. Okay, we will in the cold desert, we will take the example of case study of Ladakh. Okay, because in hot desert we have already discussed about the climate, the flora and fauna and people. Okay, so here also in the cold desert, we will take the example of Ladakh. Okay. So first we will understand the geography of the desert, that Ladakh, where actually it is present. Okay, the position, actually where it is present, and the climate, all these things we will discuss. So if we will discuss, that means the position exactly, if we will see in your textbook also one map, it is given there. Okay, that map you have to look at this. If we will see like this. So I'm trying to draw this map little now. Okay. So we will see. So this is Jammu and Kashmir. It means north. अगर हम ये करें तो यहाँ पर ऐसा पूरा मैप ड्रॉ कर लेती हूँ मैं. And it will be helpful me. Okay. So here Jammu and Kashmir, then again this, then this. So exact position, if we will see, then here it is that the Ladakh is present. So that means northeast direction. So Jammu and Kashmir और जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वहां पर लद्दाख जो है वो प्रेजेंट है. हाई एल्टीट्यूड है ना, हाई रेंज उसका बहुत ज्यादा, एंड इट इज कवर्ड बाय हियर यू नो वेरी वेल माउंटेन रेंजेस आर देयर. अगर हम देखें यहाँ पर बहुत सारे जो है माउंटेन रेंजेस आर आल्सो हियर. सो व्हाट आर दैट माउंटेन रेंजेस? सो नॉर्थ में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो है बीच इसके ऊपर में जो है काराकोरम रेंज. ओके, सो टॉप हियर द काराकोरम रेंज between Ladakh and down again Zanskar, that range it is present. Karakoram range, then middle Ladakh is there, and then Zanskar lake range is there. So three mountain ranges जो है वो कहाँ पर है? इस एरिया पे है. Okay, second thing, river Indus flow through Ladakh. Now river Indus flow through Ladakh means you know very well, near here China it is there. So it started from there, from Mansarovar that we are knowing. So Indus river जो है वो चाइना से होते होते इंडिया को क्रॉस करके वो पाकिस्तान तक जाता है. So दोनों जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज वी कैन से, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान जो है ये रिवर को जो है वो शेयर कर रहे हैं, इंडस रिवर को.
So that's here Indus River it is, yes, from China to Pakistan. Okay. Now several glaciers are found in Ladakh. Example, Gangri glaciers. Now Ladakh, if we will see, it is desert. So the desert अगर characteristic अगर हम देखेंगे, previous उसमें हमने देखा था hot desert. What are that? That low rainfall, scanty vegetation, high temperature, है ना? So low rainfall, high. So here also the same, because this is also desert. So here also same, low rainfall, scanty vegetation, and high temperature. So when it is high temperature, so it is cold. Why? Because of height. It is all the mountain ranges are here. क्योंकि सी लेवल से इसका हाइट जो है काफी 8000 नियर अबाउट उस रेंजेस तक लद्दाख जो है वो प्रेजेंट है. From sea level, if you will calculate from sea level to this. Okay, so that's why height, high altitude. So automatically temperature, we know that as we will reach high, so temperature it is decreasing. So as temperature will decrease means temperature जो है वो माइनस डिग्री में हो जाएगा. So लद्दाख में हमेशा टेम्परेचर जो है वो माइनस डिग्री में होता है. Second, rainfall it is very less because all that thing it is in a glacier form. ज्यादातर वहां पर जो है ग्लेशियर जो है वो वहां पर देखने के लिए मिलता है. One example is it is also given there, Gangri. Gangri glacier it is present here. Gangotri not Gangri. Gangri glacier is also present here. Okay. Now next it is high altitude means extreme cold. Just now I told high altitude means high altitude. If we will talk about high altitude, so that means extreme cold. जैसे हाई एल्टीट्यूड रहेगा वो एक्सट्रीम कोल्ड. वो एक्सट्रीम हॉट क्यों था? बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर. सहारा डेजर्ट इट इज, व्हाई इट इज हॉट? बिकॉज इट इज द पोजीशन ऑफ द सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो कहां पर होता है? नियर द इक्वेटर. सो डायरेक्ट सनरेज इट इज फॉलोड. सो दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर. वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. इसमें हाई एल्टीट्यूड मींस इसका हाइट जो है सी लेवल से काफी ऊंचा है, तो इसलिए एक्सट्रीम कोल्ड होता है. रेनफॉल हो, ऑब्वियसली रेनफॉल नहीं होता था क्योंकि वहां पर क्या होता है? सारा चीज जो है क्लाउड्स, तो वो होता नहीं, वो ग्लेशियर्स आइस फॉर्म में होता था. नाउ रेन शैडो एरिया. रेन शैडो एरिया दैट मींस लो रेनफॉल. अब ये रेन शैडो एरिया मींस व्हाट? That you have to understand. The area experiences freezing wind and burning hot sunlight. अब रेन शैडो एरिया अगर हम देखेंगे तो रेन शैडो एरिया मींस जो जहां पर रेन बियरिंग क्लाउड होता है. अब जैसे यहाँ पर रेन शैडो एरिया, लद्दाख का पोजीशन यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये लद्दाख का पोजीशन है. यहाँ पर रेन शैडो एरिया मींस यू नो वेरी वेल कि जो रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पर, जब रेनफॉल होता है कहां से रेनफॉल होता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन. दैट विंड इट इज मूविंग फ्रॉम, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन मींस बिकॉज हियर अरेबियन सी, हियर बे ऑफ बंगाल इज देयर. तो यहाँ से जब ये विंड जो है ऊपर जाते जाते अपने साथ वो क्या लेके जा रहा? मॉइस्चर को लेते लेते यहाँ से जब वो यहाँ तक पहुंचता है, क्लाउड्स फॉर्म होता है. क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद वो कंडेंस होता है, देन रेनफॉल होता है. अब जब ये मॉइस्चर यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर उनको क्या किसने कवर करके रखा है? माउंटेन ने कवर करके रखा है. पर ये माउंटेन जो है रेन, ये जो शैडो क्लाउड्स को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देता है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड है. यहाँ पर क्या है? आपका माउंटेन है. अब ये माउंटेन जो है, सपोज ये मैं अगर बोलती हूँ ये माउंटेन है, तो एक इधर यहाँ तक क्लाउड कोट नहीं, इस साइड में जो है वो पहुंचने नहीं देता. दैट इज नोन एज अ रेन शैडो. ये पार्ट को हम बोलते हैं रेन शैडो, क्योंकि यहाँ तक क्लाउड पहुंच ही नहीं पाते.
यहाँ से वापस, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पर क्या है, माउंटेन है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है. So this is only, and that's why in that this area low rainfall, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है रेनफॉल जो है एकदम कम होता है. लो रेनफॉल कितना, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर. वहां एवरेज रेनफॉल इफ यू विल सी ओनली 10 सेंटीमीटर. Whereas in a land plain area, if you will see, you know very well, Cherrapunji and Mawsim Ram 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है. एवरेज रेनफॉल जो है वहां पर 1000 सेंटीमीटर होता है. And whereas in Ladakh rainfall only 10 centimeters. Before only we have discussed that low rainfall, scanty vegetation and high temperature. So high temperature, what is the reason? Because it is in a high altitude. Why rainfall? Less rainfall, low rainfall, because mountain, rain shadow area. This Ladakh will come in a rain shadow area because all these mountain ranges are here. तो cloud वहां तक पहुंचता ही नहीं, तो इसलिए low rainfall होता है. Average rainfall is only 10 centimeter. Okay, the area experiences freezing wind. Obviously यहाँ पर wind जो है वो क्या होता है, एकदम freezing wind होता है. But burning hot sunlight. Now burning hot sunlight जो है, अब ये हाई एल्टीट्यूड हम बोल रहे हैं, तो सनलाइट कैसे वहां पर, बिकॉज क्या होता है कि माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पर ज्यादातर क्या है, माउंटेन रेंजेस है. और जब ग्लेशियर्स जो होते हैं एकदम व्हाइट कलर होता है, जब सनलाइट वहां पर रिफ्लेक्ट होता है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब मतलब वो कर सकते हैं. तो इसलिए वहां पर डे टाइम में जो है वो क्या होता है, बर्निंग हॉट सनलाइट वहां पर होता है. ठीक है. एंड वी नो दैट, अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि लद्दाख जो है नॉर्दर्न मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा जो है लद्दाख एंड तिब्बत रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. लद्दाख एंड तिब्बत को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड वहां पर बोला जाता है. बिकॉज हियर ऑल्सो नियर आप देखोगे वहां पर तिब्बत भी है, चाइना वहां पर तो तिब्बत भी है. तो लद्दाख और इसको तिब्बत को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि एकदम हाई एल्टीट्यूड में, यहाँ पर है एकदम हाई एल्टीट्यूड में वो पाया जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल वी कैन सी दिस वन. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि वहां पर जो है मोस्ट ऑफ द जो विंड जो है यहाँ पर एकदम फ्रीजिंग विंड जो हम लोग बोल रहे हैं वहां पर, क्योंकि जो ये जो है एकदम पोलर रीजन नॉर्थ में है, वहां का विंड यहाँ पर आता है, तो इसलिए वहां जो है बहुत ज्यादा फ्रीजिंग ठंडा वो वहां पर होता है. जितने भी पोलर रीजन से जो है विंड उस एरिया में आता है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा ठंडी भी होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख. नाउ वी विल डिस्कस नाउ फ्लोरा एंड फाउना. क्या वहां पर वेजिटेशन होता है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, विच टाइप ऑफ एनिमल्स वी कैन एबल टू सी देयर. सो फ्लोरा एंड फाउना. फ्लोरा एंड फाउना. ओके, flora and fauna. Now flora and fauna, that means vegetation in a sparse and high aridity. Sparse means very less vegetation is we can able to see there. Okay, due to high aridity the vegetation is sparse. इतना ज्यादा वहां पर टेम्परेचर, ये विंड फ्रीजिंग वो होता है, एरिडिटी है, तो दैट्स व्हाई देयर वेजिटेशन इज वेरी स्पार्स, मींस लेस, कम देखने के लिए आपको मिलता है. देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. अब उस एरिया में आप देखोगे कि बहुत कम जो है ग्रासेस जो है वो देखने के लिए मिलता है, टू ग्रेज फॉर एनिमल्स जो है वो ग्रेज कर सकते हैं, बहुत ही कम. स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. एनिमल्स के लिए भी बहुत कम वहां पर श्रब्स और ग्रासेस देखने के लिए मिलता है.
If we will talk about the trees, then there we can see, able to see the willows, poplars, okay, are seen in the valley. Now valley means you know very well, ये आपका माउंटेन हो गया. अब इस जो एरिया जो है डाउन पार्ट यहाँ पर, तो इस एरिया में जो है जहां पर स्पेस जो होता है, जो एरिया का, ये माउंटेन्स हो गया है. और दोनों माउंटेन्स अगर लगातार ऐसे माउंटेन्स अगर रहेंगे नीचे, तो उस एरिया में जो है वहां पर वैली, जिसको वैली बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वेजिटेशन जो है यहाँ ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है. विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? Willows, poplars, and willows you know very well, that is specially using for making the cricket bats, है ना. क्रिकेट बैट्स को बनाने के लिए जो है उस ट्री का यूज किया जाता है. Then during the summers, fruits trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. So during summer season, these are the especially fruits trees. Apple is very common, apricots, then walnuts. ये सारे चीज जो है वो कहाँ पर, हिमालय इस रीजन में जो है हमको देखने के लिए मिलता है. We will talk about the wildlife. Then species of birds such as robins, redstars, Tibetan snowcock, raven, and huku are the common. These are the bird species that we can able to see there. Animals of Ladakhs are wild goat, wild sheep, and yak. These are the common animal, wild sheep, wild goat, and yak. You know very well, yak is also known as a ship of that Ladakh. जिस तरह से camel जो है ship of the desert, we are saying camel is the ship of the desert. Similarly, here yak is known as that. Most of the things to carry loads and all these things were on the yak only. याक का यूज वो लोड्स कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए वहां पर करते हैं. Then sheep and goats, their hairs are usually used for making woolen clothes like a carpet, woolen sweater, shawl. You in 6th standard also I have explained you about the pashmina shawl, है ना. वो चीज जो है लद्दाख में पाया जाता है, वहां से जो है कश्मीरी पीपल दे यूज टू टेक ऑल दिस थिंग एंड देन दे आर मेकिंग द पैश्मीना शॉल एंड स्वेटर्स, कारपेट्स और वो चीज. एक्चुअली जो चीज जो है मटेरियल, रॉ मटेरियल, दे यूज टू टेक इट फ्रॉम लद्दाख ओनली. लद्दाख से वो कैरी करते हैं and then they are sending it to the Kashmir and then they used to make all this thing. These are very costly. ये जो animals है, sheep, goat and yak, इस लद्दाख में जो है ये famous है only for this thing and this is why very costly. Okay, so this is all about that flora and fauna. Now some points it is given there in the word origin कि Ladakh is made up of two words. That also I want to explain you. That La mean mountain pass and Dak mean country, and that's why there are so many in the Ladakh. So many passes are there. Rohtang Pass, Latang Pass, different pass. मतलब जो माउंटेन रेंजेस तक हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं. आइसफुल फ्रीजिंग पॉइंट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो देखने के लिए स्नोफॉल वहां पर बहुत ज्यादा होता है. सो लद्दाख एक्चुअली मेड अप ऑफ टू words, that is mountain path and country. That means country. Second thing, Dras, one of the coldest inhabited places on the earth, is located in Ladakh. Dras you know very well. Dras is also present in one part. It is there in the Ladakh, Leh Ladakh. So that is also highest, say minus degree, coldest हम बोल सकते हैं वो प्लेस. माइनस डिग्री में वहां पर टेम्परेचर रहता है, तो लोग वहां पर रहते भी हैं. आवर सोल्जर्स आर आल्सो लिविंग देयर. ओके,
That is also there because it is in a height. Just now I told that Tibet and Ladakh, it is known as a roof of the world. क्यों बोला जाता है? क्योंकि roof means you know very well, जो हमारे घर के ऊपर का जो पार्ट होता है, स्लैब, रूफ. तो लद्दाख और तिब्बत ये भी जो है known as a roof of the world, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है. Okay. Second thing, Ladakh is also known as a Kapachen, which means snowland. Another thing is that Ladakh is also known as a snowland because everywhere we can able to see a glacier, snowland. That's why it is known as a snowland. Then Chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. It is hunted for its wool known as shatus, which is light in a weight and extremely warm. Because this is very famous animals, it is usually now it is endangered, but his hairs are usually used for a woolen clothes because that is very warm. And the people, those who are living there, they are usually using this thing to keep their body warm. Then the finest cricket bats are made from the wood of the willow tree. Just now I told also willow, that tree is usually used for making the bats. Okay, so this is all about the flora and fauna and bird origins. Now people is left, that on Monday I will explain you because only 4 minutes left. Okay, so thank you all of you. Have a good day. Enjoy your Sunday and side by side read the lesson also.